ओके तो केबे आछला 2005 2005 तो करेक्ट आंसर हला हमर कोन ना सी हेजबो करेक्ट आंसर 2005 तो 2016 रो हमें करूचे तो प्रथम क्वेश्चन आंसर हला 2005 सेकंड व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन pertaining to the special status to Jammu and Kashmir तो हमरा आर्टिकल 370 जोटा को हटे दिया जाय छबे 370 जम्मू एंड कश्मीर को हटे की तो हमें को यूनियन टेरिटरी करी छे दीटा यूनियन टेरिटरी गोटेला जम्मू एंड कश्मीर आ गोटे हमर कोन हला लद्दाख तो जम्मू एंड कश्मीर जो अछि लद्दाख जो हमें कहले एटा हमर कोन ना यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट माने तार लेजिस्लेटिव असेंबली नाही किंतु जम्मू एंड कश्मीर रो लेजिस्लेटिव असेंबली अछि एटा यूटी विथ हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली ओके तो आर्टिकल 370 तो जोटा कि हमर स्पेशल स्टेटस होता जम्मू एंड कश्मीर को आउटे हमर थिला ए जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड 35 ए एटा कोन एक्चुअली 35 ए regarding property ownership एटा हमर होची रेसिडेंट हु आर द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आसा आसा तो एटा हमर रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो को माने जम्मू एंड कश्मीर परमानेंट रेसिडेंट से माने हमरो से अनुसार से माने को जॉब हला से अनुसार से माने वोटिंग राइट से माने कर रहिला लैंड किनि परिबे तो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ हमर 35 एट होची रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर एटा भी क्वेश्चन पढ़ितला त मन रखिबो हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑनर विथ भारत रत्न सचिन तेंदुलकर तो भारत रत्न हमरो का को दिया है हमरो सचिन तेंदुलकर अच्छा लास्ट ईयर हमर भारत रत्न केते जन को दिया है 5 जन को दिया है हाईएस्ट हमर भारत रत्न माने जदी कोटे ईयर के दिया है को केबे एडा लास्ट जोडा हम दिया हला तो लास्ट ईयर का को दिया है आडवाणी को दिया है ओके आडवाणी आउ के कर्पूरी ठाकुर ये कर्पूरी ठाकुर के हां बिहार रो ये कौन थिले सीएम बिहार रो सीएम थिले ओके आंड के थिले आउ एमएस स्वामीनाथन ओके ये हमें फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन हम कहूचे ओके ग्रीन रिवॉल्यूशन तापरे पीवी नरसिंह राव तो पीवी नरसिंह राव ये अंकर स्पेशलिटी कौन ना ये साउथ इंडिया रा प्रथम प्राइम मिनिस्टर ओके पीवी नरसिंह राव होछंती साउथ इंडिया रा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट पीएम होछंती पीवी नरसिंह राव सो आउ जने की रही गले चौधरी चरण सिंह तो ये हमर के थिले यूपी रा सीएम थिले एंड तमरो यूनियन रे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थिले यूनियन रो ओके चौधरी चरण सिंह तो ए पांच जनकर नाम मन रखिबो एंड भारत रत्न ऑलरेडी परीक्षा रे पढ़ी छी थरे नुहे दिथर पढ़ी छी तो लाटेस्ट जे माने भारत रत्न पाई छथि एंड तंकर कोन कोन तमे ये बिहार रो तमरो एंकर पर्टिकुलरली जो एससीबीसी जो हमर कास्ट बेसिस रे हमर जो दिया जाइतला रिजर्वेशन ये ही प्रथम फाइट करके बिहार एससीबीसी पे हमर रिजर्वेशन आनथि कर्पूरी ठाकुर ओके आडवाणी तो हमर भारतीय जनता पार्टी रे हमर फाउंडिंग मेंबर थिले ओके ए सब माने रखियो सो सचिन तेंदुलकर एटा हे गेला The Constitutional Amendment Act relating to declaration of emergency require President of India to act in accordance केते बेले हमर जो आमे जो कहते इमरजेंसी लागू करिया पे कोन दरकार कैबिनेट अप्रूव कार यूनियन कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओके एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ओके कैबिनेट रो रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट ओके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नुहे
ओके रिटन ओके एडवाइस ऑफ द रिटन एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट ओके यूनियन एटा हमर केबे आसला 1978 रे ता पूर्वरु हमर जेतेबेला हमर नेशनल इमरजेंसी कितना नंबर आर्टिकल 352 ए 352 रे नेशनल इमरजेंसी को ग्राउंड रे लगे जाय परिबो होटेला वार external aggression, aggression आउ आर्म रिबेलियन सो आर्म रिबेलियन सो तीनटा केस रे हमर कोन होची ना लगा जाय परिबो एई जो केस ता हमर आर्म रिबेलियन ता पूर्वरु जो इंदिरा गांधी लगेइथिले हेटा को केस लगेइथिले इंटरनल ओके इंटरनल डिस्टर्बेंस हमर लगेइथिले तो एटा चेंज हे कि हमर इंटरनल आर्म रिबेलियन हला तो एटा हमर केबे 1978 ओके तो एटा हमर जनता गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई वो का समय जनता गवर्नमेंट समय ओके सो ई तीनटा का हम मन रखिबो नेक्स्ट होची द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ओके सर मार्शियल लॉ समय रे हमर आर्टिकल 32 कोन माने ये हे परिबो कि कोडा कोन आर्टिकल 32 दा मार्शियल लॉ समय रे हां मार्शल लॉ माने कोनडा तमरो मार्शल मिलिटरी रूल मिलिटरी रूल हां मिलिटरी रूल तो मिलिटरी रूल ले तमरो केते गुडे हमरो रेस्ट्रिक्शन अछि ना जोठी लॉ एंड ऑर्डर रे इशू थिबो सेठी तमे करि परिबोनी 32 रे तमरो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की एगुडा को करि परिबोनी तमे केवल तमरो जो राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 20 और 21 को छाड़ देले अन्य गुडा को तो तमरो माने अप्लाई तमे करि परिबो हाँ okay so next question the disqualification on the ground of defection for a member of parliament will not apply को केस रे हमर डिफेक्शन ता लागू हाँ तो ऑप्शन डी माने जने डिस्क्वालिफाई हे जिवो आर क्वेश्चन इन केस ऑफ स्प्लिट ऑफ द ओरिजिनल पार्टी टू व्हिच ही इज इलेक्टेड स्प्लिट हेले तो हमर डिफेक्शन लागू होबनी इफ ही वॉलंटरली गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी तो से जदी वॉलंटरली गिव अप कर देले तो डिफेक्शन कोन तो ऑलमोस्ट पळेले ही बी एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग द हाउस कंट्रारी टू द डायरेक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी तो सर सेटा ए हबो सर सेटा ए हबो if nominated member of a house join a political party ए तीनटा को केस रे से डिस्क्वालिफाई हे जिवे ओके यदि वॉलंटरली गिव अप कले और abstain फ्रॉम वोटिंग तो आंसर कोन हबो ए हिजबो करेक्ट आंसर जदि स्प्लिट हे गला ताहले हमरो एटा हबो ओके स्प्लिट हे गले हमरो हबो ओके तो आंसर कोन हबो ए हिजबो करेक्ट आंसर तो जेमिति कि हमें कहबा महाराष्ट्र जो हमरो केस हला जो थिरे एकनाथ सिंधे हमरो तांको पार्टी रे 55 टा सीट थिला 55 जनरु हमर 49 जन से पार्टी रु बाहरी के आसी की गोटे माने नुवा गवर्नमेंट फॉर्मेशन कले तो सेठी पार्टी स्प्लिट हे गला ओरिजिनल पार्टी जो शिवसेना थिला एटा एकनाथ सिंधे कर हला एबे शिवसेना जोटा हला उद्धव ठाकरे आ गोटे पार्टी फॉर्मेशन करिया पले दि स्प्लिट हे जाउची ताहाले तमरा डिस्क्वालिफाई तमे हबो नाही सो आंसर कोन हबो ए हे जिवो तमरा करेक्ट आंसर ओके मे बी तमरा मॉक टेस्ट यदि दिया है बड़ा भूल आंसर अछि आंसर हबो कोन A is the correct answer. सर एथिरे 2/3 मेंशन नाही ना हां 2/3 मेंशन नाही ना खाली स्प्लिट रे भी तो डिफेक्शन हे पारि ना जे स्प्लिट माने के स्प्लिट माने कोन आइडा भी भूल तो गोटे नॉमिनेटेड मेंबर जदी 6 मास भीतर जॉइन करछि ताले डिस्क्वालिफाई हबनी किंतु 6 मास पर जदी जॉइन करछि त डिस्क्वालिफाई हे जिवो ना ताले आंसर कोन हबो ओके तो एइडा जदी 6 मास पूर्व से जॉइन करिथांदा ताले डिस्क्वालिफाई हे नथांदा समाज से पर जेहेतु जॉइन करूची तो डिस्क्वालिफाई हे जिवो सो मु तुम कहि दउची एथिरे कोन कोन हमरो मने रखिबो जे हमरो पर्टिकुलरली ए जो डिफेक्शन ता अछि तापरे दि तीनटा क्वेश्चन पडितला ओके ता डिफेक्शन हमरो एंटी डिफेक्शन लॉ केबे आस्तिला केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे 52nd अमेंडमेंट एक्ट रे को शेड्यूल ले अछि सो 10 शेड्यूल ले अछि ओके एडा हमरो केबे आसीतिला 1985 रे कहा समय रे
ना राजीव गांधी के समय ओके राज्य राजीव गांधी के समय हमर एटा आसीतला तो हमर केते बेले हमें कहूची गोटे डिफेक्शन रो हमर लागू हबो ना जते बेले जदी गोटे जणे आ गोटे पार्टी रे जाई कि वॉलंटरली गोटे पार्टी आ गोटे पार्टी को जंप करची वॉलंटरी गिव अप करची जदी पार्टी रे मेंबरशिप किबा पार्टी जो डायरेक्शन में कहची वोट दवा पई सेही डायरेक्शन रो एगेंस्ट जाई कि आ गोटे माने जगह रे वोट दोची तो सेही केस रे हमर डिस्क्वालीफाई हे जिवे एंड तमर जो इवन इफ जदी जणे नॉमिनेटेड मेंबर अछि तो इफ ही जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ पूर्व जदी जॉइन करछि डिस्क्वालीफाई हबनी किंतु आफ्टर 6 मंथ आफ्टर जदी 6 मंथ हमर जॉइन करछि ताल डिस्क्वालीफाई हो एटा किए ना नॉमिनेटेड मेंबर ओके सो एई गुडा का हमर रहिला एंड स्प्लिट हबो स्प्लिट माने कोन ना जदी आगुर जोटा 1/3 मेंबर थिला सेटा को हमें 2/3 मेंबर जदी गोटे पार्टी रो बाहर की आ गोटे पार्टी परमिशन करछन्ती हेटा हमें कहबा स्प्लिट सेठी डिस्क्वालीफाई हम सो ए जो 2/3 मेंबर हमर गोटे पार्टी रो बाहर बे आ गोटे पार्टी एटा केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट अछि हां केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे 1/3 टू 2/3 हेतला 91st अमेंडमेंट एक्ट ओके सो 91st 2003 ओके तो 91st अमेंडमेंट 2003 रे जोड़ा 1/3 थिला अपग्रेडेड करी के हमर कोन हला ना 2/3 मेंबर हमर करा गेला ओके सो इडा रहला सर जदी दलियो हुइप नथिबो जदी से आउ जन को वोट करछि से समय कोन से एंटी डिफेक्शन लागिवो दल रो हुइप तो तांकर डायरेक्शन तो थिबो ना जहाले सर एबे जो मोहम्मद मोकिम जो प्रेसिडेंट को वोट देले तो तांको विरुद्ध रे एंटी डिफेक्शन लागिलेनी की कहला तांको विरुद्ध एंटी डिफेक्शन लागिनी बोली तांको तो पार्टी बाहर करा गेला ना तांको तो सेहि पे टिकट दिया गेलानी बाहर करा गेला तांको जियो सेति पे सोफिया फिरदौस आसिले ओके से तो खोला खोली भाबे माने वोट देई छथि कहले हमर ओडिसा रे कांग्रेस रे अगेंस्ट जाई की वोट देले तो तांको अगेंस्ट एक्शन निया जायनी बोली के कहला तो तांको पार्टी रु माने रिजाइन करी तांको जियो तो हमर रहिले ना तांको पार्टी रु टिकट दिया गेलानी ओके okay so which of the following is shall not be considered as an adequate ground for issue proclamation of national emergency तो एटा हमर कोटा नेशनल इमरजेंसी हम एबे डिस्कशन करले 352 रे हम नेशनल इमरजेंसी अछि तो कोटा वर्तमान हमर एडिक्वेट ग्राउंड नही ना इंटरनल डिस्टर्बेंस जोडा किला एटा को हमर केबे ना 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे एटा को हमर रिमूव करा जाय छी ओके रिमूव करा जाय कि हमर एटा कोन ना एई इंटरनल डिस्टर्बेंस रु आर्म रिबेलियन रखा है जेटा हमर जनता गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई के समय हेतला ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स काउंटरपार्ट इन यूएस तो केमिति इंडिया रा सुप्रीम कोर्ट यूएस रा सुप्रीम कोर्ट टू डिफरेंट so its role as a guardian of the constitution in its advisory role in its role as a supreme authority of judicial field in the country in its read jurisdiction C The rate jurisdiction. हां सर सीटा हबो कारण तांकर फेडरल कोर्ट रो फेडरल केस हबो आ स्टेट कोर्ट रो स्टेट केस हबो ओके सो हमरा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जोडा के तांकर नो तांकर स्टेट फेडरल लॉ करिवो एंड स्टेट पई स्टेट लॉ करिवो तेनु हमर जेमति की टोटल सुप्रीम कोर्ट जहा डिसीजन नौ जे फाइनल तांकर सेमति नहीं ओके सेंटर पई सेंटर फाइनल करिवो माने तांकर फेडरल कोर्ट स्टेट पई तांकर स्टेट कोर्ट हमर जोडा अछि ओके सो आंसर कोन हबो सी हे जिवो हमर करेक्ट यूएस रे भी एडवाइजर रोल नाही सेटा भी नहीं ओके तेनु आर आंसर ता तमे देखिबो ओपीएससी रे कोन देछि बी आउ सी दीटा कमी ओके सो बी देथिला आंसर आर चेक करिवो ओके तो तांकर भी एडवाइजरी रोल नाही आ एटा भी तांकर होछि जे तांकर हमर जेंति इंटीग्रेटेड आ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी तो एटा एडवाइजरी रोल आ बी आउ सी दीटा जाक तांकर ये ओके सो ओपीएससी आंसर की कोन देछि बी देछि ओके सर स्क्रीन टा टिके एडजस्ट कर दे लेफ्ट साइड टिके कटि जाय लेफ्ट साइड टिके आगे
गोटे सेकंड देख ठीक अछि सर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कम्स अंडर द कनकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कनकरेंट लिस्ट कोडा हमर अछि त हमर ट्रेड यूनियन टा हमर कनकरेंट लिस्ट अछि इंटरस्टेट रिवर टा कोथि आसीबो ओके एडा हमर यूनियन लिस्ट ओके तापर सिटीजनशिप यूनियन लोकल गवर्नमेंट at least ओके सो स्टेट रासियो ट्रेड यूनियन हमरा कनकरेंट रासियो ओके हमरा ई कनकरेंट लिस्ट ता कोड हमें अडॉप्टेड करी छे ऑस्ट्रेलिया एटा परीक्षा रे पडितला ऑस्ट्रेलिया हमरा करी छे ओके ऑस्ट्रेलिया रो हमें कनकरेंट लिस्ट जो हमरा अछि तो एटा हमरा ऑस्ट्रेलिया रो हमें आइ छे ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी included in the constitution of India inspired by the directive principle of state policy hame कोड हन से Ireland कोले डायरेक्ट Ireland and Ireland वाला कोड कॉपी करछंती स्पेन हमर केते नंबर आर्टिकल केते नंबर आर्टिकल थिला 3651 36 रु 51 थिला ओके पार्ट केते थिला पार्ट 4 थिला आईबी सो ओके तो हमर एंड एटा हमर कोन करा होतला ना कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट कथा कहउतला एटा दिथर पडितला मन रखता कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट की कहउची डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओके तो सोशियो-इकोनॉमिक जस्टिस नेक्स्ट द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड ए डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट तो हमर कोन हबो ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेंटर स्टेट हला किबा स्टेट हला तो ओरिजिनल जुडिक्शन कोन आसीबो ओके सेंटर वर्सेस स्टेट किंबा स्टेट वर्सेस स्टेट ए दीटा का हमर कोन ना ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रास ओके मन रखिबा वेरी इंपोर्टेंट आईएएस रो प्रीलिम क्वेश्चन बितला ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रे हमर कोन ना सेंटर वर्सेस स्टेट किंबा स्टेट वर्सेस स्टेट एडा हमर ओरिजिनल डिस्प्यूट अच्छा इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट टा ओरिजिनल डिस्प्यूट रे आसीबो ना नहीं interstate river water dispute हमरा आसीबनी तो interstate river water dispute it will not come okay मने रखिबो एटा आसीबनी ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एटा ओडा पढितला एटा इंटरनेशनल रिलेशन रो Cuban Missile Crisis and building of Berlin Wall where एटा कहा को समय रहतला during the Cold War समय माने एक्चुअली वर्ल्ड वार 2 परे तो गोटे पटे हमर रहला यूएसएसआर आ गोटे पटे हमर रहला यूएस तो यूएसएसआर हमर जो रहला यूएस जो रहला वेस्टर्न साइड रे से माने जो ग्रुप करिवे सेटा कोन थिला नाटो नाटो केबे फॉर्मेशन हला ओके हां 1949 ना 48 देखिबो टिके ओके 1949 ने नाटो रो हेडक्वार्टर कोठी बेल्जियम ब्रुसेल ओके बेल्जियम ब्रुसेल एडाई परीक्षा रे पड़ितला एंड एथिरे वर्तमान नाटो रे केतटा कंट्री अछंती हां 32 तो लास्ट किए स्वीडन ओके मने रखिबो एटा पढिबो परीक्षा रे तो जेहेतु एते न्यूज रहउची नाटो केबे फॉर्मेशन हेतला 1949 रे तार हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल रे 32 टा कंट्री अछंती आर हेडक्वार्टर हला कोठी ए जो लास्ट मेंबर किए ना हमरा स्वीडन तो सिमिलरली यूएसएसआर हमर ओटे ग्रुप क्रिएट करले जोटा हला हमर कोन वार्सो पैक्ट ओके सो वार्सो पैक्ट ए हमर तो सेति पई सेते बेला हम जो क्यूबान मिसाइल क्राइसिस हला तो ए क्यूबा रे यूएसएसआर ओटे हमरा मिसाइल एस्टैब्लिश कला सेटी सेंटर हमरा प्लान थिला एंड बर्लिन वॉल हमरा जो ई जो जर्मन को हमें कहबा थ्री भाग रे डिवाइड करके हमरा कराइतला सो ड्यूरिंग कोल्ड वार समय रे हमरा एटा होतला सो टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी बिटवीन हमरा यूएस यूएसएसआर तो तांकर जो दिजन जाक भीतर जो फाइट चलीतला तो सेटा हम कहउचे कोल्ड वार सो व्हिच कंट्रीज political party system has been described as empty bottle
बाय ब्रुइस। तो एटा हमरा कोन ना यूएस तो को कंट्री एटा हमरा एमती जने स्टेटमेंट दिएछि तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ओके यूएस रो द कांसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज गिवन बाय Montesquieu. Okay, mane rakhiba separation of power was given by Montesquieu. Okay, next, the unlawful detention of a person is questioned by the read jurisdiction of habeas corpus. Okay, habeas corpus. तो हमर जो फंडामेंटल राइट रे अछि जदि तमर फंडामेंटल राइट वायोलेशन होउची तमे सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो केतना नंबर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट को जाई परिबो अंडर आर्टिकल 226 रे जाई परिबो। तो तमरा सुप्रीम कोर्ट आमे कहूचे ता पाखरे डिफरेंट रीड्स अछि ओटेला habeas of corpus। habeas of corpus रा मीनिंग कोन To have the body. टू हैव द Body of. ओके तो आर मीनिंग कोन ना यू कैन नॉट डिटेन ए पर्सन इलीगली। तमे जदी काहा को इलीगली डिटेन करी कि रखिछ ताहाले कोर्ट इमीडिएटली ऑर्डर दबा टू रिलीज। जदी इलीगली डिटेन करी रखिछ जदी देखिबे नै एटा लीगली वे रे अरेस्ट हेइ छथि ताल दैट इज ओके। तो हमर कोन होची ना एटा काहा माने गोटे केवल गवर्नमेंट पब्लिक अंडर एटा इश्यू करी हबो ना प्राइवेट अंडर रे भी इश्यू करी हबो बोथ माने रखो एटा होची बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट बॉडी दीटा के अगेंस्ट एटा हमरो इश्यू करी हबो। सो habeas of corpus तमे जने इलीगली तमे भी जने जणु जदी इलीगली डिटेन करी रखिछ त कोर्ट तम अगेंस्ट भी एक्शन नै करे। ओके habeas of corpus। ओके आ उडे कोन थिला mandamus। mandamus माने कोन एडा परीक्षा रे पढितला हमें आगु करबा। हां we command रा मीनिंग कोन माने why higher court public authority को command दबो why you are not doing your duty properly। तमे जदी तम ड्यूटी ठीक रे करू न ताहाले तमको कमांड दिया जिवो why you are not performing your duty in time। जदी तमे डॉक्टर अच्छा मेडिकल न हो तमरा प्राइवेट क्लिनिक रे अच्छा ओके और तमे प्रोफेसर अच्छा माने कोचिंग सेंटर रे आसी पढौछ तमर स्कूलिंग माने तमरा सेही कॉलेज टाइम रे ओके। mandamus गला आ उटेला प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन माने कोन To forbid. एडा किए दिए कहा को दिए हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को दिए। ओके सो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को दबो कोन करिवो ना प्रोहिबिट करिवो नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स। प्रोहिबिशन माने प्रोहिबिट करिवो जेडा हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को दबो। ओके तापरे आउट दिला सिटेररी रे कोन हुए ये कहिबो जे हायर कोर्ट लोअर कोर्ट रु डायरेक्टली ओडे केस ता ट्रांसफर करी कि नै परिबो निजे किबा कहिबो टू डिस्पोज दैट केस वेरी इयरली। ओके To be certified. ओके हां टू बी सर्टिफाइड आउट एला क्वारंटाइन। तो इथिरे हमर कोन हुए नॉन व्हाट अथॉरिटी को अथॉरिटी रे तमे एटा परमिशन देला तमर अथॉरिटी जदी नाही अथॉरिटी बाहर जदी तमे कोनसी एक्शन नै चबे देखो जने वीडियो तर तमे गोटे अथॉरिटी नाही तमर सेटा लैंड कन्वर्सन करिया पई जदी तमे करिछ इमीडिएटली सस्पेंड हबो जने सस्पेंड हेइ छे 3-4 दिन तळे। ओके तो तम अथॉरिटी बाहर जदी कोनसी डिसीजन नउछ देन एटा होछ हमर कोन ना क्वारंटाइन रो। ओके ठीक अछि। सो राइट टू एजुकेशन हैज बीन प्लेस्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे आस्तला राइट टू एजुकेशन 86 2002 रे आस्तला 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे। तो ए जो राइट टू एजुकेशन में हमें कोन कले ना फंडामेंटल राइट रे ओटे हमर ऐड कले फंडामेंटल राइट रे केते नंबर आर्टिकल ऐड कले 21 ए रे कोन होची ना 6 रु 14 वर्ष पिलां को ओके 6 to 14 इयर्स पिलां को फ्री आउ कंपल्सरी को एजुकेशन एलिमेंटरी एजुकेशन। ओके 6 रु 14 वर्ष एलिमेंटरी एजुकेशन मन रखबो हमें कहबा हायर एजुकेशन इज नॉट फ्री हमें एलिमेंटरी एजुकेशन रा फ्री करा जाय छी 6 रु 14 वर्ष पिलां को। ओके एंड एथिरे फंडामेंटल ड्यूटी रे कोन थिला 86 अमेंडमेंट एक्ट the citizen have to the duty of the parent to send their children to school। okay send their child to school। तो जो चाइल्ड माने को एंड डीपीएसपी रे कोन थिला
सब्जेक्ट लाइन ऑफ आर्टिकल 45 रो सब्जेक्ट लाइन को हमर चेंज कराइतला इथले कोन 0 to 6 years यारली चाइल्डहुड केयर ओके तो एटा मन रखियो तीनटा को 86 अमेंडमेंट एक्ट दी तीन थरा परीक्षा रे पडिछि प्रथम रे पडिथिला राइट टू एजुकेशन कितना नंबर एक्ट रे आसिला 86 राइट टू एजुकेशन कितना नंबर आर्टिकल 21 ए तापर राइट टू एजुकेशन जो 86 अमेंडमेंट एक्ट आसिला को ईयर रे आसिला 2002 ओके तीनटा क्वेश्चन पडिछि मन रखियो आपरे सर फंडामेंटल ड्यूटी रे जो सर देछि एजुकेशन विषय रे सेटारो एज किछ नहीं कि कोडा सर फंडामेंटल ड्यूटी रे जोटा अमेंड करा हला तारो एज नहीं ए तमे तो 6 रु 14 वर्ष पिला को पठेबो स्कूल को माने माने जदी तांको फ्रीली पाठ पढा होची माने मागणा रे खाइबा को दिया होची पाठ पढिया को दिया होची ड्रेस दिया होची बही दिया होची तेनु काहे कि तमे पिला को स्कूल को पठेबनी तो ओटा ड्यूटी एटा पेरेंट्स करो जदी जने पेरेंट्स कहउछन हम पाखे पैसा नहीं गवर्नमेंट तो पैसा दउछि तने कहबो खाइबा को नहीं गवर्नमेंट तो खाइबा को दउछि तो तमर काम हला कोन ना ड्यूटी हला तमे स्कूल को पठाओ एटलीस्ट 14 वर्ष जोडा कि राइट टू एजुकेशन 6 रु 14 वर्ष पिला को तमे स्कूल को एटलीस्ट पठाओ ओके सर दिव्यांग मानक पे अलगा किछि एज अछि कि दिव्यांग मानक पई तांको तो स्पेशली तांको पई तो तमर कहबो धर एससी एसटी मानक पई तांको पई तो एजुकेशन माने पूरा 10th कोन तांको तो स्कॉलरशिप दिया जाउछि ओके से मानक पई तो फ्री अलग रहउछि दिव्यांग हला रिजर्वेशन कथा हमें कहउने पूरा हमें जनरल कथा जो कहउछे ओके एटा मन रखो द बुक 20 इयर्स ऑफ क्राइसिस इज रिटन बाय ओके फैक्चुअल क्वेश्चन मन रखतो तो एटा कोन हबो ईएच कार तबे 2017 क्वेश्चन करिबा which of the following are matter on which the parliament has the power to modify the provision of the constitution by simple majority रे कोडा तमे करि परबो कोडा सिंपल मेजॉरिटी रे तमे चेंज करि परबो हां ओनली वन तीनटा जदि तमे सेकंड चैम्बर जदि काउंसिल ऑफ स्टेट को एबोलिशन करबो ताले को हमरा मेजॉरिटी दरकार स्पेशल मेजॉरिटी ना सिंपल मेजॉरिटी ओके सिंपल मेजॉरिटी दरकार तमे जते बेले विधान परिषद क्रिएशन माने स्टेट रे स्पेशल मेजॉरिटी हमें पार्लियामेंट कथा पचारुछे सो पार्लियामेंट रे कोन को मेजॉरिटी दरकार सिंपल मेजॉरिटी दरकार ओके तो पार्लियामेंट रे एटा भी सिंपल मेजॉरिटी दरकार अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट एटा हमर आर्टिकल 3 रे अछि एटा भी सिंपल मेजॉरिटी दरकार ओके एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एटा भी सिंपल मेजॉरिटी दरकार तो आंसर कोन हबो 1 3 4 आ भीतर नाही सो आंसर हे जिवो सी हे जिवो करेक्ट आंसर नन ऑफ दिस ओके तो कोन हबो एटा हमर आर्टिकल 3 ओके आउ आ पे हमर सिंपल मेजॉरिटी दरकार तो सेकंड हमर गोटे सेकंड हमर जदी हमर विधान परिषद क्रिएट करा जिवो केत नंबर आर्टिकल 169 एटा भी हमर सिंपल मेजॉरिटी दरकार ओके सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एटा भी हमर कोन ना सिंपल मेजॉरिटी दरकार तो एटा ही हमर एडिशनल जज पे हमर स्पेशल मेजॉरिटी दरकार तेन 1 3 4 हबो तो आंसर नाही तो करेक्ट आंसर कोन हबो नन ऑफ द ऑप्शन सी हे जिवो हमर करेक्ट आंसर ओके बुझि पाइला ना बुझि पाइला हेलो आर्टिकल 368 रे सिंपल मेजॉरिटी टा इंक्लूड होउनी ना 368 टा स्पेशल मेजॉरिटी हम कहले ओके 368 रे जोटा हबो जो एडिशनल जज कथा हम कहले तो सेटा हमर 368 रे हबो तो सेटा हमर सिंपल मेजॉरिटी हमर ऐड हो ओके सो तापरे नेक्स्ट सर प्रेसिडेंट इलेक्शन ऊपर जने क्वेश्चन पचारि चंदी कमेंट रे तारो टिके रिप्लाई देखिबे जम्मू कश्मीर रो लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स पार्टिसिपेट करू चंती कि नहीं हां करू छंदी ना ओके कारण हमर जो यूनियन टेरिटरी रो हमर विधान सभा अछि कारण प्रेसिडेंट का इलेक्शन सेते बेले हमर जम्मू एंड कश्मीर विधान सभा हेई नथिला तांकर इलेक्शन आसी नथिला सेति पई नहीं तेणु नेक्स्ट टाइम जिते आम प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम तो डेफिनेटली से भाग ने तेणु दिल्ली पांडिचेरी और जम्मू एंड काश्मीर तीन जन इलेक्टेड मेंबर माने भाग ने ओके सर ओके सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
तो आंसर हवा कथा इथिरे राजेंद्र प्रसाद नहीं तो एटा जवाहरलाल नेहरू हवा कथा आंसर ओके आंसर कोन हवा कथा भूल आंसर दिया है जवाहरलाल नेहरू ओके जदी पचराई थांदा हु इज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ताहाले सेडा होछंदी राजेंद्र प्रसाद किंतु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बसेया पे गोटे कमिटी बसतिला तार चेयरमैन किए तार चेयरमैन ऑफ जवाहरलाल ओके सो राजेंद्र प्रसाद नो जदी एई कमिटी वार्डटा नथांदा एठी ताले थांदा राजेंद्र प्रसाद जदी हमर पचारने हु इज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राजेंद्र प्रसाद हु इज द चेयरमैन जो कमिटी गठन करा हैतिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पई तो तार होची जवाहरलाल नेहरू आंसर होची कोन ना बी हिजो ओके So Indian Federation is based on the pattern of तो हमर जो इंडियन फेडरेशन टा कोड होनी चाहिए कनाडा तो हमें कहले हमर ओडे फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रांग यूनिट ओके स्ट्रांग सेंटर रहउची यूनिटरी बायस ओके स्ट्रांग माने फेडरल विथ यूनिटरी बायस माने कोन यूनिटरी बायस माने कोन माने तमर जदी इमरजेंसी लागू होला पावर हमर सेंटर को अधिक मिले धर आम स्टेट इमरजेंसी हो नेशनल इमरजेंसी हो जोटी भी गला स्टेट उपरे आमर कोन हबो ना सेंटर लॉ कर परिबो सो आमर गोटे स्ट्रांग सेंटर विथ आमर फेडरल स्ट्रक्चर रहिला ओके फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बायस एटा आमर रहउचे एटा कोड आडिचे कनाडा ओके सो मन रखिबो कनाडा इज द करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर ओके सो तमरो which of the following included in the directive principle of state policy in the constitution कोड हमरो directive principle of state policy रे अथला सो हमरो कोन यूनिफॉर्म सिविल कोड अथिला ना नहीं 44 केते नंबर आर्टिकल 44 एटा हमरो माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल तीनटा पार्ट अछि गोटे सोशल गोटे गांधीयन आ गोटे लिबरल इंटेलेक्चुअल एटा लिबरल सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्टिव 50 एटा कोदरा आसीबो प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस 49 एटा भी लिबरल आसी ओके सो तीनटा जाक हमर कोन होची डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे हमर मेंशन अछि एंड कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट हमर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री आ पाए हमर फंडामेंटल ए जो हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रहउछ एंड दिस इज नॉन जस्टिसेबल माने रखि थाओ जेमति फंडामेंटल राइट तमर वायोलेशन हले तमे कोर्ट जाई परछ किंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिसेबल यदि यार सिविल कोड कोठी सर हेतिला पोस्ट रे कोडा उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा ओके माने यूनिफॉर्म सिविल कोड फास्ट हमर को स्टेट रे इंप्लीमेंट हेतिला ओके ओके गोवा रे ठीक अच्छे तुम जिते जो क्वेश्चन माने जोड़ा करेंट रिलेटेड टॉपिक सेठी कहि देउथाओ सो दैट समस्त रिवीजन भी हेजबो ओके जहा जहा जानुच सेठी लिखि देउथाओ और कहि देउथाओ द फिलोसफी postulate the constitution of India based on ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जोटा कि जवाहरलाल नेहरू हमरा पास करिथिले ओके 1947 में ओके तो सही अनुसार हमरा होची कोन ना द फिलोसॉफिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमरा who among the following is not a member of the state reorganization commission appointed by Jawaharlal Nehru पोटी सिरामुल सो के तीन जण हमर थिले फजल अली केएम पानिकर आ हुदयनाथ कुंजरू तो एई तीन जण थिले से हमर कोन स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी रा मेंबर थिले पोटी सिरामुल हम नथिले पोटी सिरामुल कोन करथिले सर आंध्र स्टेट कैटेगरी पे हंगर निया लगे दिथिले ओके तो सीए माने जे कि माने स्टेट बेसिस रे लैंग्वेज बेसिस रे स्टेट हवा पई हम डिमांड करके निया लगे दिथिले तो ता परे अंकर डेट परे हमर फास्ट लैंग्वेज बेसिस रे फास्ट जो स्टेट क्रिएट करा गला तो सेटा हमर कोन 1953 सो आंध्र प्रदेश हमर 1950 केते रहला 54 आंध्र केबे हला 1954 रे हेतला ना ओके देखि दबो चेक कर दबो 53
53 है ओके तो मन रखिबो तापरे ए जो हमरा कहूचे अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिपील द फंडामेंटल राइट कौन पे फंडामेंटल राइट को आमे डिलीट करि परिबा नहीं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कांसेप्ट हमर केबे आसिला 1973 केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 रे ओके 1973 रे हमरा आसिला जोउथरे आमे कहले जो गुडा को बेसिक स्ट्रक्चर अछि से गुडा को पार्लियामेंट कोन करि परिबनी डिलीट करि परिबनी ऐड करि परिबो ना ऐड करि परिबो किंतु डिलीट पूरा टोटल डिलीट करि परिबनी तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोडा आउ केतोडा मते कहिला जोडा बेसिक स्ट्रक्चर आसुछि रूल ऑफ लॉ सोवर्निटी सेकुलर रूल ऑफ लॉ Judicial review. Judicial review. Okay. Independent of judiciary. Okay. Separation of power. Okay. हाँ secular कथा कहले separation of power. हाँ. तो सबुड़ा में parliamentary sovereignty. Okay. तो ये सबुड़ा हमारा कौन होची ना तमरो बेसिक स्ट्रक्चर आसी जोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर सेउडा तमे डिलीट करि परिबो नाही तो ए आर्टिकल एडा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आमे जदि कोनोसी हमारा पार्लियामेंट माने जदि संविधान रो अमेंडमेंट करिया को चाहूचे तो तीनटा वे रे आमे कहले गोटे तो हमारा सिंपल मेजॉरिटी रे आमे कर दोचे आउ केते गोटे रहउचे ना जोडा हमारा मेजर होउचे आर्टिकल 368 रे हमारा जदि चेंजेस करिया रो अछि कोन हमारा स्पेशल मेजॉरिटी ना सिंपल मेजॉरिटी रहउची स्पेशल मेजॉरिटी plus half of the state ओके स्पेशल मेजॉरिटी गोटे कंडीशन आउ गोटे कंडीशन होची ना स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रैटिफाइड करिवे हाफ ऑफ द स्टेट रैटिफाइड को केस एउडा हमर करंती ना जोडा फेडरल स्ट्रक्चर पर हमरा अफेक्ट करथो मते गोटे एग्जांपल को जोडा हमरा हाफ ऑफ द स्टेट भी रिक्वायर्ड जीएसटी कारण जीएसटी रे हमरा स्टेट रु भी हमरा गला केते गुडे हमरा हला एग्जांपल हमरा जीएसटी जेते हमरा हला तो एडा हमरा स्पेशल मेजॉरिटी पास करा गला and half of the state NJSC yes तो इथरे कारण जज माने जेतले जीव सुप्रीम कोर्ट आ हाई कोर्ट रो जज जेतु हाई कोर्ट रो जज स्टेट को एडा हमरा अफेक्ट करूची तो सेति पे हम कहले जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आ हाई कोर्ट रो जज मानकर जदी हमें कोन करिबा पावर बढ़ेबा और तांकर नंबर ऑफ जज बढ़ेबा तो ए सब गुडा पे हमर स्पेशल मेजॉरिटी हमें दरकार जोथरे हाफ ऑफ द स्टेट भी हमर रैटिफाइड करी ओके सर दीटा क्वेश्चन थिला एबे सर कोन पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी कहले किंतु हमरो तो पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी नाही ना बेसिक स्ट्रक्चर अपन पार्ला जो हमर पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी टा के देखिबो बही रे तो सेटा हमर बेसिक स्ट्रक्चर आसुची कि नहीं रूल ऑफ लॉ सेकुलरिटी इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी अछि एई पॉइंट लिखा है ना नहीं पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी कारण लॉ करिवार दायित्व होची कार पार्लियामेंट ओके लक्ष्मीकांत रो जो बेसिक स्ट्रक्चर चैप्टर देखिबो जे पार्लियामेंट सोवरेनिटी ता प्रेजेंट थरो हमर आसिला ना हमर इंडियन माने कंट्री रो सोवरेनिटी अछि पार्लियामेंट रो तो नहीं नहीं सोवरेनिटी वर्ड ता अछि ओके सोवरेनिटी वर्ड अछि ओके तो सोवरेनिटी वर्ड अछि किंतु पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी अछि ना नहीं ठीक देखियो ओके आउ सर सेपरेशन ऑफ पावर एटा सर हम इंडिया रो नहीं ना सेपरेशन ऑफ द Separation of power between executive, judiciary and legislative. माने समस्तଙ୍କର अलग separation power between judiciary and executive एटा हमर तो DPSP रे अछि से legislative माने तीनटा जाक अलग अलग तांकर ड्यूटीज रहइबो बोली सेटा मेंशन अछि judiciary with executive okay judiciary and with executive हमर separation of power from executive to judiciary एटा अछि okay सर गोटे देइथिला क्वेश्चन मु करिथिली थरे सर इंडिया और यूएसए भितरे कोन डिफरेंस अछि सेथिरे सेपरेशन ऑफ पावर देइथिला तार एक्सप्लेनेशन ने थिला कि हम इंडिया रे सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करूनी आ यूएसए रे सेटा एग्जिस्ट करछे तांकर माने सेपरेशन ऑफ पावर माने कोन सेठी तांकर जो डिसीजन जो निया जाउची तांकर एग्जीक्यूटिव आ तांकर पार्लियामेंट भितरे भी तो सेपरेशन ऑफ पावर अछि कारण तांकर एठी हमें कोन होची ना जहा डिसीजन निया जाउची तो सेटा तांकर प्रेसिडेंट ही तांकर डिसीजन नउछंती
ओके एंड हमर कोन होची ना आगो पार्लियामेंट हेला पर ही अप्रूवल होची तांकर समिति तो तांको सिस्टम अलग अछि सेठी आज्ञा सर सेटा मु पढ़ी किना तपर लास्ट एडा पाइली कि तांकर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जेतु अलगा सिट पई लिखुची जे एमती जदी नॉर्मल सेपरेशन ऑफ पावर पडिथिबो सेटा हमर इंडिया रे अछि कि नै रे हम माने कोन जानि परबा आर्टिकल 14 जो आर्टिकल 50 तो से कहलो ना सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन हमर कोन एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी भीतर हमर अछि बोली आर्टिकल 50 तो से लिखो हां बेसिक स्ट्रक्चर में भी अच्छी सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ओके अच्छा हां हो तेनो एटा मन रखिबो तापरे नेक्स्ट होची जे बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर एटा हमर केबे आसिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो एथिरे हमर कोन हबो ना जो लोकसभा राज्यसभा लोअर हाउस और अपर हाउस एटा मन रखिताओ एटा सेंट्रल लेवल ले जदि मु एठी चेंज कर देबी एटा को प्रोविंशियल लिखि देबी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोविंशियल लेवल ले जदि बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द प्रोविंशियल लेवल फर्स्ट टाइम केबे आसिला 1935 रे तो 1935 रे हमर 6टा प्रोविंस रे बाइकैमरल लेजिस्लेचर हला जोटा कि आज तमे कहउछ महाराष्ट्र रे अछि ओके बिहार रे अछि कर्नाटक रे अछि यूपी रे अछि तो 6टा प्रोविंस रे जदि प्रोविंस पचारिछि त 1935 जदि सेंटर पचारिछि 1919 ओके मल्ले जोटा मॉन्टेगु चेल्सफॉर्म रिफॉर्म जोटा कहउछ हु सेड all communalism is harmful the logic of minority communalism is separatism and majority communalism culminate into fascism ओके की कहिथिले एटा मन रखता बिपिन चंद्र ओके बिपिन चंद्र ओके so article 371 of the constitution of india provides for special provision with respect to each of the following 371 ता हमर कोन नागालैंड एंड सिक्किम ना महाराष्ट्र गुजरात सो महाराष्ट्र ओके 371 ता होची महाराष्ट्र गुजरात को हमर जो स्पेशल प्रोविजन हमर दियाइतला which of the following is not correct statement regarding the unitary system unitary माने कोन ना सेंटर हितरे पावर रहइबो तो हमर सब पावर जन खाते रहइबो यूनिटरी माने कोडा नॉट पचारिछि ओके ध्यान से मन रखिबो नॉट पचारिछि ओके तो डिवीजन ऑफ पावर माने कोन है डिवीजन ऑफ पावर हुए कि हमर यूनिटरी कोन हबो डिवीजन ऑफ पावर हबनी जन खाते पावर रहइबो ओके तेनु इन यूनिटरी देयर इज वन स्टेट एंड वन गवर्नमेंट एटा ठीक अछि ओके लोकल बॉडीज हैज देयर पावर एंड ऑटोनॉमी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिटरी सिस्टम इज पर्टिकुलरली फॉर ए स्मॉल कंट्री तो एटा तमे जानि छै डिवीजन ऑफ पावर माने हमें कोन करूचे ना एटा ओटे फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी होय फेडरल स्ट्रक्चर हमरा डिवीजन ऑफ पावर हुए ओके सो बी इज नॉट करेक्ट द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी होल्ड द ऑफिस फॉर द so 6 or 65 okay 6 or 65 okay 6 or 65 तो मते कुह यूपीएससी हमर केत नंबर पार्ट रे मेंशन अछि 305 14 नंबर पार्ट केत नंबर आर्टिकल 315 ରୁ 323 223 315 ରୁ 323 केते जण हमर यूपीएससी रो मेंबर जनरली रुहंती 9 to 11 अंकर मेंबर चेयरमैन को की अपॉइंटमेंट दियंती प्रेसिडेंट ओके अंक कार्यकाल केते वर्ष 665 ओके तेनु एटा मन रखिबो सिमिलरली 6 to 65 आउ कार हमर ये इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एमानकर ईसीआई सेम कोड तो अंकर भी केते 6 और 65 अंकु भी की अपॉइंटमेंट दियंती प्रेसिडेंट ओके सीएजी कर कार्यकाल केते वर्ष 6 और 65 ओके ये कितना नंबर आर्टिकल 324 ये कितना नंबर आर्टिकल 148 ओके 148 तो अंकु भी हमर की सीएजी को की अपॉइंटमेंट दियंती
प्रेसिडेंट तेणु तीन जन को मन रखिबो आंकर मेंबर चेयरमैन को चीज तो जाने रहिले ओके अन्य मानकर मेंबर चेयरमैन तांको अपॉइंटमेंट की दियंती प्रेसिडेंट आ कार्यकाल केते वर्ष 6 और 65 ओके कोडा हमर साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रा कोडा साइलेंट फीचर नुहे ओके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल कमिटेड जुडिशियरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो कोडा कमिटेड जुडिशियरी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ओके तेणु एटा मन रखिबो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हमर ओके सो हमर कमिटेड जुडिशियरी नुहे ओके सो कोडा हमर नॉट हमर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यस lengthiest written constitution supremacy of the constitution रहुची quasi federal structure हमर रहला and distribution of power between center and state जोटा कि हम 7 शेड्यूल रे अछि ओटे यूनियन आ ओटे स्टेट लिस्ट आ ओटे कंकरेंट लिस्ट सो 2018 क्वेश्चन हमें करबा यूनाइटेड नेशंस कमिटेड जुडिशियरी माने कोन सर हां कमिटेड जुडिशियरी माने गवर्नमेंट प्रोपागेंडा को फॉलो करबो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी माने तमरो गवर्नमेंट जेमति के एनजेसी रहिला सी कहले जे गवर्नमेंट रो इथरे कोनसी से रहिबनी जदि गवर्नमेंट रो लोक जदि एग्जीक्यूटिव डिसीजन नउचंदी ताहाले से माने कोन करिवे ना डाइल्यूटेड कर देबे ओके तेनु ए माने पूरा सेपरेशन रहउची से कमिटेड जुडिशियरी माने कोन ना ओनली गवर्नमेंट रो डायरेक्शन में चली तो ए माने हमर जो कंट्री रहउचंदी त हमर कोन होचे इंडिपेंडेंटली हमें चलुची ओके सो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड यूथ स्किल डे केबे ऑब्जर्व होची मन रखिबो जुलाई 15 रे ओके who is one of the below is not a statutory body कोडा हमर statutory body ओके नीति आयोग हम डिटेल ले पढी जे नीति आयोग हमर केबे आसिला 5 जनवरी 2015 रे आसिला प्लानिंग कमीशन को हमर हटे तो हमर एटा कोउथिरे नीति आयोगटा काम करूची कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ओके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हम कहूचे एटा हमरा को बॉटम अप अप्रोच ओके बॉटम अप अप्रोच आ नीति आयोग रो चेयरमैन तमे जानि छ किए प्राइम मिनिस्टर वाइस चेयरमैन किए छथि सुमन बेरी एंड सीईओ किए छथि बीबीआर सुब्रमण्यम ओके एथिरे नीति आयोग रो जो तार जो हमें कहले नीति आयोग रो काउंसिल ले की रहउ छथि पीएम रहउ छथि ऑल फेडरल चीफ मिनिस्टर रहउ छथि एंड यूनियन टेरिटरी जो थी हमर लेजिस्लेटिव असेंबली अछि तार चीफ मिनिस्टर एंड हमर आउ के रहउ छथि ना लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी तो एटा भी पढी थला आगु का हमें देखिबा सो आंसर कोन हबो नीति आयोग फाइनेंस कमीशन केतना नंबर आर्टिकल अछि 280 एबे केतना नंबर फाइनेंस कमीशन बसी छी 16 नंबर किए हमरा चेयरमैन अछंती अरविंद पानागरिया अरविंद पानागरिया किए थिले सर नीति आयोग रो वाइस चेयरमैन ये फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ओके सो नीति आयोग रो ये फर्स्ट वाइस चेयरमैन थिले ओके सो अरविंद पानागरिया मन रखिबो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एबे की अछंती ज्ञानेश कुमार हमर रखि जाउ ना बहुत कंट्रोवर्सी से अछंती ओके व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेशन ऑफ द दिनेश गोस्वामी कमिटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म सो टाइमली हमरा बाय इलेक्शन हो इंक्रीज द डिपॉजिट फ्रॉम इंडिपेंडेंट अमेंडमेंट टू एंटी डिफेक्शन लॉ वोटर काउंसिल शुड बी फॉर्म फ्री एंड फेयर इलेक्शन एटा तारंकर रिकमेंडेशन ओके सो दिनेश गोस्वामी कमिटी खाली यदि पढिबा रिलेटेड टू व्हाट इलेक्शन रिफॉर्म करते ओके इलेक्शन रिफॉर्म ऊपर हमरा कहितले दिनेश गोस्वामी कमिटी तापरे अंक भितरु से पचारि जे कोउडा कनकरेंट लिस्ट रे नाही ओके तेनु कनकरेंट लिस्ट रे कोउडा नाही पचारि जे ओके तो हमरा कोन एक्शनेबल रॉन्ग बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी प्राइस कंट्रोल ओके कैपिटेशन टैक्स तो एटा हमर डीटा मन रखिबो तो एटा कैपिटेशन टैक्स ओके तो एटा हमरो नाही डीटा हमरो नाही ओके व्हिच इज नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट करा कोडा डिस्क्रिशनरी पावर नो सस्पेंसिव वीटो पॉकेट वीटो टू डिसाइड द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन in case of the caretaker government summon and dissolve the parliament summon and prorog okay summon and prorog of the dissolve of the eta kaharo
जो ये रे करंती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर Prime Minister. ओके तो प्राइम मिनिस्टर कहबे तांकू डायरेक्शन देबे केबे हमर पार्लियामेंट ता बसिबो केबे हमर बंद हबो और डिजॉल्व हबो डिजॉल्व माने कोन 5 वर्ष कंप्लीट हे गेला नुवा इलेक्शन आछबो डिजॉल्व हबो तो एईटा से हमर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डायरेक्शन में करंती आउ सस्पेंसिव विटो निजे करि परिबे ओके गोटे थरा हमर पार्लियामेंट को से पठै परिबे और रिकन्सिडरेशन पाई किंतु जदि रिकन्सिडर हे आसिला सेटा से अप्रूवल करिया पे बाध्य ना बाध्य नहीं बाध्य किंतु स्टेट रो बिल ता जदि आसिला सेटा से अप्रूवल करिया पे बाध्य ना बाध्य नहीं बाध्य ओके पॉकेट विटो माने कोन ना अनलिमिटेड टाइम पर्यंत होल्ड करके रखि देबे ओके टू डिसाइड द डेट टू एडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट ईएस भी एटा पितांकर डिस्क्रिशनरी पावर रे आसे सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को से अप्रूव करे पे बाध्य ना बाध्य नो कोडा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को से जनरली हमर अप्रूव करि दियंती ताकू हमर कोन करि परिबेनी ना तमरो रिजेक्ट करी माने हमें कोन कहू ना तांकू जो रिकन्सिडर पई पठै परिबे ओके और सेटा को हमर जनरली से अप्रूव करंती ओके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टा को से अप्रूव करंती Which article of the Indian Constitution speak about the official language of the Indian Union? So official language टा हमारा कितना नंबर आर्टिकल 343 So 343 टा होते हमारा रहुची language of the Indian Union. अब in which year the simultaneous election both for Lok Sabha and all state legislative assembly were not held? देखो 52 रु हमारा जो 15 वर्ष 57 62 एटा कंटीन्यूअसली हेतला तापरे रीजनल पार्टी आसी कर दिबा जगु तो डिवाइड हे के हमरो हे गला 1971 ने हमरो साइमल्टेनियसली इलेक्शन हे माने सेंटर और स्टेट रो एट ए टाइम हे ओके तो हमरो कोउटा 6 शेड्यूल को स्टेट ता हमरो आसुनी मणिपुर आसनी ओके त्रिपुरा मिजोरम आसाम सिक्किम आसुनी कौन कौन को चारिटा स्टेट हमरो जो 6 शेड्यूल थाए मिजोरम त्रिपुरा आउटे कोन मेघालय की मणिपुर सर मेघालय ओके ए चारिटा हमर कोन होची ना तमरो 6 शेड्यूल रे रहउची ओके सो मन रखियो चारिटा आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम सिक्किम हमरो आसुनी जीएसटी बिल जोडा आसिला एटा हमरो केते नंबर बिल नंबर केते नंबर थिला 122 हमर कोन थिला एटा 122 नंबर बिल नंबर 122 एक्ट नंबर होची केते 101 ओके बिल एक्ट विथ डिफरेंस जानि छ बिल ता जतले इंट्रोड्यूस हे बिल जतले अप्रूवल हे कि बाहर सेटा हमरो एक्ट ओके बोथ हाउस रे पास होला परे तो एटा हमरो जीएसटी बिल ता स्पेशल मेजॉरिटी रे ना सिंपल मेजॉरिटी रे हितला स्पेशल मेजॉरिटी होते हाफ स्टेट सो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा कोडा थिला लाइफ पर्सनल लिबर्टी प्राइवेसी सबुडा तमु ठीक लागे राइट टू लाइफ ओनली राइट टू पर्सनल लिबर्टी प्राइवेसी तो तीनटा देखो राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी राइट टू प्राइवेसी ओके आर्टिकल 21 राइट टू मैरी कोथिरा सिबो 21 राइट टू हमरो इंटरनेट केत नंबर आर्टिकल आसीबो 19 राइट टू डेथ नहीं सर 21 काना इथनेसी हम जो कहू जे तो ताकू हमरो राइट टू लाइफ जे तो राइट टू डेथ तो एटा पर्सनल लिबर्टी जो इच्छा मृत्यु तो सेति पई राइट टू जदि हमें देखिबा सब मोस्ट इंपोर्टेंट कोडा ना 21 ओके 21 भीतर सेटा आसी तो व्हिच स्टेट इन इंडियन यूनियन आर्टिकल 35 ए रिलेट्स टू तट हम 35 ए कोन कहितली 35 ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओके परमानेंट रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओके कि को माने हमर परमानेंट रेसिडेंट भीतर आसीबे तो सेटा हमर जम्मू एंड कश्मीर तो एटा रहउची ओके नेक्स्ट होची हमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर रिपील्ड फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 26 अमेंडमेंट एक्ट रे
कोड हमर रिपील हेतला ओके तो एडा हमर कोन हबो ना मने रखिबो सर रिपील अर्थ कोन सर 362 तो एडा रिपील अर्थ कोन हां छोटा हबा रिपील माने कोन सर रिपील माने पूरा डिलीट करा हेतला कोडा हम कॉन्स्टिट्यूशन नु एडा को बाहर कर दिया हिच रिपील करा हिच माने डिलीट करा हिच प्रथम मते को 291 और 362 टा कोन हां प्रीवी पर्स आगुरु हमर राजा और महाराज माननकु जो पेंशन दिया जाउथला ओके तो जो पेंशन दिया जाउथला सेटा को आबोलिश एबे आउ अछि कि से जमीदारी सिस्टम अछि कि आउ से राजा महाराज को पेंशन दिया होछि कि नहीं प्रीवी पर्स जो हमें कहूचे तो सेटा तो एटा को हमर हटै दिया जाय छै ओके promotion and development of micro and small enterprises by supporting them in marketing of the product produced and service rendered by them comes under which of the policy of the government right public procurement price तो मते गवर्नमेंट ऊपर ना क्वेश्चन हां एटा पब्लिक पॉलिसी ऊपर क्वेश्चन कि सर हां पब्लिक पॉलिसी ऊपर क्वेश्चन ओके सो हमें जो जदी देखिबा गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट करूची जो डिफरेंट धर आमे कहिबा कोन केते चेयर दरकार की केते कंप्यूटर दरकार त को पोर्टल थ्रू रे करूची जेम पोर्टल वेरी गुड ओके जेम पोर्टल थ्रू रे कहूची ओके जीईएम तार फुल फॉर्म कोन गवर्नमेंट ई-मार्केट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ओके जेम पोर्टल माने का जेमति के हमरा अमेज़न रे तमे सब जिंस किनुच गवर्नमेंट रा पोर्टल रे सब एमएसएमई माने कोन करिवे ना सेठी तांकर प्रोडक्ट शो करिवे गवर्नमेंट देखिबो जोडा तांकू क्वालिटी प्रोडक्ट आ कम दाम रे मिलुची ओके सो गवर्नमेंट हमर जो प्रोक्योरमेंट ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट करूची जेम पोर्टल थ्रू रे हमर करूची ओके सो हमर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेफरेंस टू मेक इन इंडिया पॉलिसी ओके सो नेक्स्ट the model of development by government of India for public service delivery as a part of citizen centric governance कोडा को मॉडल टा को हमें गवर्नमेंट हमर अडॉप्ट करिछि सेबोथम मॉडल ओके सेबोथम मॉडल माने कोन सो दैट डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेबोथम माने डेवलपमेंट ऑफ ऑल आउ सर्विस शुड बी रीच टू एवरीवन तो सेटा हमें कहूचे तो आकु नै कि तमरो सिटीजन सेंट्रिक पाई जदि मु पचारि बेबे तुमको ओडिसा रे जदि एबे रिसेंटली हमर लॉन्च हिची आम शासन कोन ओके आम शासन ए जो इनिशिएटिव टा कोन जदि पडिबो पब्लिक पॉलिसी ऊपर आम शासन ओडे पोर्टल एबे लॉन्च हिची जानछो कोन होई रे फीडबैक ऑफ पब्लिक फीडबैक मैकेनिज्म दिया जिवो ओके फीडबैक मैकेनिज्म ओके फीडबैक मैकेनिज्म ग्रीवेंशियल रिडक्शन मैकेनिज्म दिया जिवो आगुर जो थिला 5T मो सरकार तमे ओडे पुलिस थाना को गलो पुलिस तमरो एफआईआर लिखला नाही को भलिया बिहेवियर कला तुमको माने पोलाइटनेस देखला नाही तुमको गाड़ी कला नाही तमे जदी जहा लिखिबो सो दैट विल बी द फीडबैक फॉर दैट स्टेशन से अनुसार तांको ऊपर एक्शन निया तेणु आम शासन होची गोटे वर्तमान तमे व्हाट्सएप हो तमे इंस्टाग्राम हो ट्विटर हो तमे गवर्नमेंट को तमरा फीडबैक एबे तमे देखु ना सब टैग करि दउ छथि ओके जे हमरा हैशटैग करि के हमरा गवर्नमेंट को तमरा कंप्लेंट डायरेक्ट लिखि परिबो तो ए जो आम शासन होची तो इट इज ए सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस जो थिरे तमे जो सर्विस पाइलो हाउ मच यू आर सैटिस्फाइड तमे सैटिस्फाइड ना ना हो तो ता ऊपर तमे कोन करिवो फीडबैक मैकेनिज्म तमे दे परिबो ओके सो आम शासन मन रखि थाओ जोटा कि ओडिसा रे बे लॉन्च हिची नेक्स्ट द नंबर ऑफ states cover under the panchayat provision for panchayat extension to schedule area 1996 रे आसीतला एटा केतटा स्टेट को एथिरे नाही आंसर ओके सो एटा इवैल्यूएटेड हि नतला एक्चुअली आंसर कोन हबो 10टा स्टेट को हमरो ओके पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया पेशा एक्ट जो हमें कहते 1996 रे आसीतला कारण हमर पंचायत राज जो हमर जो 3 टायर पंचायत राज था शेड्यूल एरिया स्टेट गुडा को अलाउ नहीं तो केतटा हमर शेड्यूल एरिया हमर एमती अछि हम जो कहबा केतटा स्टेट रे हमर ई पेशा एक्ट लागू होछि 10टा ओडिशा आसुछि ना नहीं आसुछि ओडिशा आसुछि ओके आउ छत्तीसगढ़ आसुछि ना नहीं आसुछि झारखंड आसुछि ना नहीं ओके छत्तीसगढ़ जोडा कि मेजर ट्राइबल एरिया रहउछि तमे हिसाब करिवो मध्य प्रदेश आसीबो ना नहीं ओके तेनु हमरा जो जोडा का हमरा ट्राइबल एरिया रहउछि तो से गुडा का मेजर रहउ 14टा स्टेट हमर रहउछि जोडा कि पेशा एक्ट अंडर रे हमर आसुछि 124 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
2019 रे क्वेश्चन करबा 124 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू इन द फॉर्म ऑफ कोड हमर 124 टा हमर को नंबर केत नंबर एक्ट थिला 102 EWS तडा हम केत नंबर एक्ट थिला ओके सो हमर 103 नंबर थिला ओके 103 थिला 124 टा तो 100 ओके 103 टा हमर कोन थिला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ओके जो मानकर रोजगार 8 लाख रु कम ओके तो तमन को 10% रिजर्वेशन दिया जिवो ओके 10% रिजर्वेशन दिया जिवो हमर ओके को माने को ईडब्ल्यूएस को माने ईडब्ल्यूएस रासिबे ना जो मानकर रोजगार 8 लाख रु कम 8 लाख रु यदि कम होचे सो एडा हमर अच्छा जो माने हमर ओबीसी माने को दिया जिवो ना नहीं ना एडा को कैटेगरी लोक को दिया जिवो ईडब्ल्यूएस जनरल लोक जनरल लोक पई हमर 10% रिजर्वेशन तमे तो ऑलरेडी एससी माने होवंतु एसटी माने होवंतु ओबीसी माने होवंतु से माने पाई जाइछन जो माने बिल्कुल किछि पाई नाहंती तो तांको पई होचे ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी और यूआर कैटेगरी लोकंग पई जने ब्राह्मण लोक को भी हमर 10% रिजर्वेशन लागो अच्छा ओपीएससी रेटा लागू होछि ना नहीं ओपीएससी रे लागू होछि ओके एंड यूपीएससी रे लागू होछि ना नहीं यूपीएससी रे लागू सो यूपीएससी रे एटा लागू होछि किंतु ओपीएससी रे एटा लागू होछि ओके तो ओपीएससी रे भी लागू होबा दरकार एटा हमर ईडब्ल्यूएस who of the following person is the first lokpal of India okay so kiye okay first हमर किए रहै पिनाकी चंद्र घोष भूल अछि सीन है रंजन गोगोई हबो ना सर हां फर्स्ट रंजन गोगोई ना नहीं फर्स्ट लोकपाल देखिबो पिनाकी चंद्र घोष एटा भूल लिखा जाय छी सो आंसर कोन हबो पिनाकी चंद्र घोष हां सर पिनाकी चंद्र घोष पिनाकी घोष हबो पिनाकी चंद्र घोष पिनाकी साइट रे सी ही देचंती ऑप्शन ना ना भूल पेपर से पढ़ी जाई ओके ओके इंडिया बोरोड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें जहां पे पढ़िले त हमें कोडा आनिचे आयरलैंड रो आनिचे ओके व्हिच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एनीमोर कोडा फंडामेंटल प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी एटा कितना नंबर आर्टिकल थिला फंडामेंटल राइट रो आर्टिकल 31 ए थिला एटा को केबे रिमूव करा गला 44 1978 रे आको कोठी की निया जाई छी 300 एटा को वर्तमान ना ओनली लीगल राइट ओनली लीगल राइट मन रखिबो ओके तो राइट टू प्रॉपर्टी जोटा कि हमरो आगुर फंडामेंटल राइट 31 ए थिला एटा 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे हटै की ओनली गोटे लीगल राइट रखा है 300 ए रे हमरो तो आंसर कोन हबो ए हे जो ओके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट कितना नंबर आर्टिकल 32 बिआर आंबेडकर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट को कोन बोलले एटा हमर ओमास रे पड़ितला हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री एटा कितना नंबर आर्टिकल 19 सब क्लॉज केते मते को डी डी हां माने चैप्टर नंबर पीसफुल असेंबली 19 सब प्लस 2 ओके तेनु मन रखिबो तार ये गुडा के मन रखिबो हु इज पार्ट ऑफ द इंडियन कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट हमें कहितले डीपीएसपी तार आईएस भी पढितला कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट कथा हमें डीपीएसपी रे रहिছে एक माने डीपीएसपी टा हमर ब्रिटिश समय रे जो हमर थिला 1935 रे इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो इंस्ट्रक्शन दिया जाउथला 1935 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रे और एटा को हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी माने रखितो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिफरेंट हमर गवर्नर मान को दिया होतला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रे सेम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कितना नंबर आर्टिकल रे 25 to 28 ओके सो 25 रो 28 नंबर हो राइट टू फ्रीडम माने हमरा 19 रो 22 केते 22 कोन फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ओके
25 रु 28 गला 23 24 कोन Right against Right exploitation. एक्सप्लॉइटेशन फंडामेंटल राइट टा कितना नंबर पार्ट रे अछि पार्ट 3 पार्ट 3 कोड आसी यूएसए कितना नंबर आर्टिकल 12 12.6 गोटे माने आईएएस रे पढितला आर्टिकल 17 कोन abolition of abolition of titles ओके तापर आर्टिकल 20 कोन जो डबल jeopardy Protection in respect of okay of offences. okay conviction against offense okay सेथि अछि नो डबल jeopardy गोटे नो डबल jeopardy माने कोन माने सेम क्राइम पई तमे दुई थरा जेल जीवन ओके No self नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन माने कोन ओके देन तमरो एइथले आर्टिकल तमरो रहिला 22 कोन राइट अगेंस्ट अरेस्ट ओके आर्टिकल 28 कोन Sir, freedom attending religious institution, educational institution. Religious institution. कोना दिया जीवो Freedom from attending religious. सेटा 27 रे ओके No religious instructions provided any educational institution. रे हमर कोन होची रिलीजियस Individual practicing education institution. ओके सो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रे हमरो रिलीजियस प्रैक्टिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की हो जोटा मेंटेन ओनली ऑफ स्टेट फंड सेटा प्राइवेट गुडा नहीं केवल हम कहले जे गवर्नमेंट रो जो इंस्टीट्यूशन गुडा काम रहउची ओके गांधीयन प्रिंसिपल और फिलोसफी हैव बीन एनुमरेटेड तो गांधीयन प्रिंसिपल हमरो डीपीएसपी रे हमर रहिची आर्टिकल 47 कोन Slaughter cow. प्रोहिबिशन ऑफ लिकर ओके प्रोहिबिशन ऑफ लिकर 48 कोन एनवायरमेंट cow slaughter ban of cow slaughter okay तापरे 40 कोन ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत Organized village panchayat. 43 बी कोन कोऑपरेटिव अमेंडमेंट एक्ट रे आसिला 2011 ओके सो मन रखिबो which of the following set of bills is presented the parliament with the budget the budget संगे कोडा हमर दिया हुए ना फाइनेंशियल बिल मनी बिल दा कितना नंबर फाइनेंशियल बिल 17 ओके अप्रोप्रिएशन बिल कितना नंबर 112 बजट 114 114 ओके अप्रोप्रिएशन बिल होची 114 फाइनेंशियल बिल 17 117 ओके 117 सर ये कॉन्टिजेंसी बिल तमरो कॉन्टिजेंसी बिल एमती किछि नाही ओके कॉन्टिजेंसी फंड अछि ओके कंसोलिडेटेड which of the following is the middle unit of the three tier government पंचायत राज रा मिडिल यूनिट ता कोडा पंचायत समिति ओके पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कितना नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे आसला 1973 नंबर शेड्यूल 11 पार्ट 9 शेड्यूल 11 कितना नंबर आर्टिकल 243 रु 243 हो ओके एंड एटा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हमर
जदि देखा आगु आम तो थिला आर्टिकल 40 ताकू प्रैक्टिकल सेप का देला आर्टिकल 40 तो एथिरे हमर थिला कोन ना फर्स्ट हला गोटे 3 टायर गवर्नमेंट टा सब स्टेट रे हमर अप्लाई हबो किंतु जोठी बिलो 20 लाख अच्छी पॉपुलेशन सेठी अप्लाई नहीं ओके अप्लाई ओनली ऑन द स्टेट वेयर द पॉपुलेशन इज मोर देन 20 lakhs तो 3 टायर गवर्नमेंट रे ग्राम पंचायत टॉप रहला मिडिल रहला पंचायत समिति जिला परिषद आउ सेकंड रहला आउ तार कोन इंपोर्टेंट फीचर रहला ग्राम सभा रे को माने भाग नेबे ना जो माने वोटर लिस्ट ना थिबा पर्टिकुलर पंचायत को अंकर इलेक्शन पंचायत राज रो किए करछि स्टेट इलेक्शन कमीशन ओके स्टेट इलेक्शन कमीशन हमर पंचायत रे इलेक्शन करछि को अपॉइंटमेंट किए दोछि स्टेट इलेक्शन कमीशन को गवर्नर दोछंदी अंकर माने रिमूवल किए करूछि प्रेसिडेंट को केमति रिमूव करा जाए like a judge of high court मन रखिबो जज ऑफ हाई कोर्ट रा जज केमिति बारंती like a judge of सुप्रीम कोर्ट रा जज केमिति बारंती स्पेशल incapacity ओके जज ऑफ द हाई कोर्ट एमन बारंती आउ जने अछि हमर एथिरे इंपोर्टेंट प्रोविजन होछि जे हमर ओटे स्टेट फाइनेंस कमीशन ए स्टेट फाइनेंस कमीशन जो लांकु की अपॉइंटमेंट होछंती गवर्नमेंट कार्यकाल केते वर्ष स्टेट फाइनेंस कमीशन कार्यकाल केते वर्ष 5 years प्लेजर मेंशन है नहीं कोडी मेंशन नहीं आज एटा हमर कोन करूची ना डिपेंड करूची स्टेट लेजिस्लेटिव एंड गवर्नर जहा डिसाइड करिवे ओके कोडी मेंशन नहीं 6 और 65 5 वर्ष की मेंशन नहीं ओके तो एटा रहइला एंड एथिरे हमर आउ कोन कंपलसरी प्रोविजन अंकर जो इलेक्शन होची केमती होची डायरेक्ट इलेक्शन होची तीनटा को लेयर रे डायरेक्ट इलेक्शन होची कार्यकाल केते वर्ष 5 years 5 वर्ष ओके 5 वर्ष पूर्व जदी भांगी गला जदी नुवा गवर्नमेंट फॉर्मेशन हला केते वर्ष हमर कंटिन्यू करबो सो रिमेनिंग टर्म हमर ये करबो ओके एंड तमरा जो पंचायत राज रो हमें कहले हमर मिनिमम एज केते वर्ष तमे इलेक्शन लढिया पई 21 years तो एतिक तमरा मिनिमम तो एडा को कमिटी रे हमर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन मीनिंग कोन मीनिंग कोन दारो लोकल गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल माने रखिबो ग्रास रूट लेवल और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑन द ग्रास रूट लेवल ओके एडा को कमिटी रिकमेंडेशन आस्तिला बलवंत राय मेहता कमिटी केबे आसिला 1957 ने बलवंत राय मेहता कमिटी सेही कमिटी रो रिकमेंडेशन ने हमर फर्स्ट पंचायत राज इंस्टीट्यूशन केबे आसिला 1959 अक्टोबर 2 ओके 2 अक्टोबर 1959 रे कोडी राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट ए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को हमर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को कमिटी रिकमेंडेशन देथिला अशोक मेहता एडा भी हमर परीक्षा रे पड़िथिला को कमिटी हमर प्रथम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देथिला अशोक मेहता कमिटी ओके कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमर राज रे वुमेन मान को रिजर्वेशन भी होते थिला ना कोडा 33% रिजर्वेशन हमर वुमेन मान को थिला ओडिसा रे होची 50% ओके सर जो पॉपुलेशन कथा कहतले कोन कहले सेकंड पॉइंट जो कहतले सेकंड होची जे पंचायत राज जो 3 टायर गवर्नमेंट रहइबो जोठी 20 लाख रु कम पॉपुलेशन से स्टेट को एडा हमर एप्लीकेबल ओके तो नेक्स्ट ला हुई जे हम द फॉलोइंग द मिडिल गला इन व्हिच चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मेंशन ऑफ यूनियन सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड हम कोडी डीपीएस आर्टिकल नंबर 44 article number 44 okay in case of the dispute between two house of the parliament over a ordinary bill the case is referred to joint sitting of the both house joint sitting कितना number article
108 108 रे हमर जॉइंट सिटिंग कथा लिखा है 108 रे दीटा हाउस रे जदी किछि डिस्प्यूट होउची त जॉइंट सिटिंग डका जानती किए डाकंती प्रेसिडेंट डाकंती प्रेसिडेंट डाकंती प्रेसिडेंट डाकला परे जो जॉइंट सिटिंग ता हुए तेको प्रिसाइड किए करंती स्पीकर ऑफ लोकसभा एडा हमर प्रिसाइड करन सो आर्टिकल मन रखिबो जॉइंट सिटिंग ता होची आर्टिकल नंबर 108 रे होला एडा समन बाय प्रेसिडेंट and presided by speaker of the Lok Sabha and joint sitting ta only ordinary bill case re hi paribo okay ordinary bill case re hi paribo constitutional amendment bill case re hi paribani और तमरा money bill case re hi paribani finance bill case re hi paribo okay so amara ordinary bill case re amara eta hi paribo so joint sitting eta amara डका जाय okay next question who represents the government of India while representing the budget of parliament parliamentary की हमरा पढ़ंती finance when a bill is reserved by the governor for consideration of the president within what time he must return the bill no time limit time लिखा है सेही दी पाई हमरा का कोन होची एमे कंट्रोवर्सी अछि आईएएस एई वर्ष आईएएस रे गोटे क्वेश्चन पड़ितला केते नंबर बिल गोटे हमरा गवर्नर गोटे बिल ता प्रेसिडेंट को कंसीडरेशन केते नंबर बिल 01 आर्टिकल 201 दूसरा कोन होय तो 200 रिजर्व ये करन जासी 200 रे कोन हुए 201 रे कोन हुए मते कुआ को प्रथम 200 रे सर विथहोल्ड करन veto power of governor 200 Sir, president has the final ओके आ 201 grant or not. वो veto power ओके सो कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट हमरा 201 रे हुए 200 रे कोन हुए veto Assent bill. हां governor veto Assent grant करिवे होल्ड करिवे president. सर assent bill हां ओके सो आमे कहले ना तांको पकरे आइदर असेंड द बिल और हमरो असेंड द बिल जो आमे कहूचे आर्टिकल 200 आ जो प्रेसिडेंट कंसीडरेशन पय जोडा पठांती सेटा होचे 201 एथिरे हमर कोन होए ना असेंड द बिल बिल को असेंड करियो ओडे तमरा दीटा का हाउस रे पठेला पर सी कोन करियो आइदर अप्रूव करिवे अप्रूव केतरे करिवे 200 रे तापरे सी कोन करिवे रिकंसीडरेशन पे पठे देबे किंबा प्रेसिडेंट को कंसीडरेशन पे जो पठेबे एटा होची प्रेसिडेंट को कंसीडरेशन जोडा हमरा यूपीएससी एई वर्ष 2025 रो क्वेश्चन 2024 रो क्वेश्चन ओके 25 रो थिला ओके रिमेंबर दिस वन आउ एटा ए वर्ष कोटम परीक्षा रे पडियो सर एबे भी तो रिसेंट न्यूज रे सेटा डिबेट चलची 200 से डिबेट करा होची जो तमिलनाडु गवर्नर को जो हमर बिल गुडा को पठै दउ छंती आज से माने पेंडिंग हे रहउ छंता सब बिल गुडा को एमति से पठै देबे आ किछि लेखा नै कॉन्स्टिट्यूशन रे केते दिन भितरे हमर छन सेति में सुप्रीम कोर्ट कहि छि जे 3 मंथ्स भितरे यू हैव टू ओपीएससी रे भी बहुत पिलां को एटा इंटरव्यू रे पचरा है ओके तो मन रखिबो तो टाइम लिमिट किछि नाही किंतु एबे सुप्रीम कोर्ट कहू जे 3 मास भितरे तमे एटा अप्रूव करिवो ए ताल तो संविधान ने कोठी लेखा नाही तमे किमति 3 मास भितरे कहूछ दैट मींस एटा ओडे जुडिशियल ओवररीच ना नाही तेणु सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल ओवररीच कि सुप्रीम कोर्ट कहवा कथा हो जे तमे टाइम लिमिट लेखा नाही बोली तमे कोन एमती सब गुडा को जदी पेंडिंग करी रखबा ताल तो तमर मालाफाइड इंटेंशन ने तमे एटा जानि सुनि केमती करूछ ओके तो ता पई सी हमरो ए डिसीजन हमरो दे दे तो आंसर कोन करछ 3 मंथ्स ना नो लिमिट नो लिमिट ना हमर संविधान में किछि लेखा नहीं ओके नो लिमिट हमर एटी जो देखाय थांदा कि हमर रखाय थांदा ओटे सिचुएशन देय थांदा व्हाट इज द लाटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हमें सेठी 3 मंथ्स कथा कहब हमर संविधान में किछि एमदी लेखा नहीं सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड द ऑफिस हमें कहिथिले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंतु सीजीआई होंतु और यूपीएससी रो मेंबर चेयरमैन सेमानकर कार्यकाल केते वर्ष 6 और 65 सो आंसर हबो 6 और 65 नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंजॉय द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू माने कोन लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द जोडा हमर कोन होची ना तमरो लॉ पास करा गला
से लॉटा केते दूर ठीक ना भूल तो वेदर इट इज विदिन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री और नॉट जदि विदिन द नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री सेटा को हमर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा जिवो नल एंड भॉइड करा जिवो जुडिशियल रिव्यू पावर ता हमर केते नंबर आर्टिकल अछि 13 आर्टिकल 13 ओके Article 13 जुडिशियल रिव्यू लिखा है सर बोल जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू वर्ड टा मेंशन नहीं है जुडिशियल रिव्यू इटे कोआ होछि जे एनी ऑफ द लॉ व्हिच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल विथ द फंडामेंटल राइट्स यदि तम फंडामेंटल राइट अगेंस्ट गोटे आसिला सेटा को जदि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोली हमर घोषणा करा सो जुडिशियल रिव्यू इनडायरेक्टली हमर आर्टिकल हमर केते 13 ने हमर मेंशन अछि द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एटा को केस रे आसिला सच्चिदानंद भारती वर्सेस 2020 रे क्वेश्चन द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग रे को माने रहिबे सो प्राइम मिनिस्टर ऑल चीफ मिनिस्टर आउट थांदा ऑल सीएम ऑफ ओके ऑल स्टेट तो ऑल चीफ मिनिस्टर रे समान जीवे हां ऑल चीफ मिनिस्टर भीतर से माने भी पळेबे लेफ्टिनेंट गवर्नर हां ऑल चीफ मिनिस्टर यूटी रो पिलांगर कंफ्यूजन होछि जे यूटी रो चीफ मिनिस्टर इथे जिबे ना नहीं ऑल चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर कहार जिबे जारो जो सो आंसर ए ही गला हमरा करेक्ट आंसर चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल चेयरमैन की होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ओके मन रखिता जोनल काउंसिल चेयरमैन होचंदी होम मिनिस्टर एंड ए जोनल काउंसिल रे हमर जो पर्टिकुलर जोन है सपोज हमर ओडिशा टा को जोन रे आसीबो ईस्टर्न जोन आउ की अछंदी इथे झारखंड रहइबो वेस्ट बंगाल रहइबो झारखंड सिक्किम तो एथिरे हमर कोन होची ना जो माने रहिबे तो सेथिरे तो हमर चेयरमैन हे गेले होम मिनिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन के हेबे सब जनकर जो हमर डेप्यूटी सीएम चीफ मिनिस्टर के भितर किंतु रोटेशन वाइज ओके तो ए वर्ष जने हेले आर वर्ष आउ जने हेबे तो ए भले ओके द कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट ए क्वेश्चन रिपीटेड बार बार पढुची द कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट आमे कोडी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे हु एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर ए शेड्यूल एरिया किया हमर करि परिबे शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करि परिबे प्रेसिडेंट ओके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल एरिया द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ भितरु कॉन्करेंट लिस्ट आमे कोटू कॉपी करिचे ऑस्ट्रेलिया रु ओके कॉन्करेंट लिस्ट हमर ऑस्ट्रेलिया रु आमे कनाडा रु कोन कॉपी करिचे फेडरेशन साउथ अफ्रीका रु कोन करचे ओके जापान रु कोन करचे रूल ऑफ लॉ ओके ओके प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ अच्छा हमरो जो फ्रांस रु कोन करचे कॉपी इक्वालिटी रिपब्लिक लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी अच्छा आ कौन रही गला प्रियम्बल तो भाई जुडिशियल रिव्यू कोड यूएस अच्छा प्रेसिडेंट इलेक्शन सर कौन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कोड कॉपी करते यूके आयरलैंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रेसिडेंट को बाहर करिबा इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यूएस ओके तने माने रखिबो तमरा एइ पढु छी गोटे क्वेश्चन सब Which schedule of the Indian Constitution distribute emergency provision को कोठू बाहर का आने चाहिए जर्मन हां 1935 हां the suspend of fundamental right during emergency German okay fundamental USSR fundamental duty okay fundamental so duty coming to the next question ता भितरु तो हमरा यूनियन और स्टेट भितरे जो डिवीजन ऑफ पावर हमर कोथरे अछि 7 शेड्यूल ओके 7 शेड्यूल अछि तो हमर यूनियन लिस्ट केतडा अछि वर्तमान केतडा अछि 97 97 नाउ स्टेट लिस्ट रे 100
स्टेट यूनियन लिस्ट 100 सर यूनियन लिस्ट अपडेट 100 एज एबे 100 ही जाईची आज्ञा बुक रे ना यूनियन कमी तो कि 100 97 नहीं जाईची गूगल रे भी देखियो 100 सर 100 ओरिजिनल 97 सर 100 ओके देखि दबो जहा है छै तो तापरे मांडामस हमें कहितले मांडामस माने कोन asking the public official or any other authority to perform the duty we command कथा कहले तमे जदि तम ड्यूटी ठीक रे करूनो ताले तुमको जुडिशियरी हायर कोर्ट तुमको ऑर्डर देबो कि काहे तमे करूनो asking a public official and any authority to perform his duty so answer कोन a is the correct answer any money bill cannot be introduced in the parliament without the consent of president of India नहीं छाड़ा प्रेसिडेंट नहीं तापरे नेक्स्ट president of India स्पीकर ऑफ द लोकसभा ओके तो एडा हे थांदा मनी बिल कैन नॉट माने सेंड टू राज्यसभा के पार्लियामेंट जगह राज्यसभा हे थांदा ताहाले हमर स्पीकर किंतु पार्लियामेंट्री इंट्रोड्यूस हुए प्रेसिडेंट कर कंसेंट रे ओके प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट सेति पई प्रेसिडेंट मनी बिल टाको कोन करंती ना तमरो रिटर्न करंती ना ओके एटा मनी बिल नो स्पीकर कहबे ना करेक्ट क्वेश्चन भूल अछि हां एटा मनी बिल का नहीं जो हमर की कोन कहबे ना हमर एटा स्पीकर हमर कहबे ओके सो मनी बिल ता हमर केते 110 मनी बिल ता कोड इंट्रोड्यूस हबो ओनली लोकसभा प्रेसिडेंट एटा हमर कोन लोकसभा रे हमर को मेजॉरिटी रे हुए सिंपल मेजॉरिटी राज्यसभा ये सर्टिफाइड करंती स्पीकर सर्टिफाइड करंती डीजे मनी राज्यसभा लिमिटेड से अछि राज्यसभा कैन नॉट डिलीट करि परिबनी और रिजेक्ट करि परिबनी और अमेंड करि परिबनी कोन करबो 14 एटा कोन करबो सजेस्ट करि परिबो सजेशन दबो खाली डिस्कशन करि परिबो ना नहीं डिस्कशन करि परिबो सजेशन दबो सजेशन ओके सो सजेशन गुडा का लोकसभा आइदर एक्सेप्ट करि पारे और हमरा एक्सेप्ट न भी करि पारे ओके तो एटा मन रखिबो अच्छा मनी बिल टा को हमर विथहोल्ड करि हबो ना नहीं यस ना नो गवर्नमेंट रिटर्न करि हबो और करिए सर नहीं विथहोल्ड करि हबो ना नहीं विथहोल्ड भी करि रिटर्न करि पारे ना विथहोल्डर ने एसेंट दे पारे नहीं विथहोल्ड करि परिबे ना नहीं मु पचाछ करि पारे यस सर ऑलरेडी हेछि करे ओके करि परिबे विथहोल्ड करि परिबे रिटर्न करि परिबेनी तो जनरली अप्रूवल दे देथांती किंतु विथहोल्ड करि परिबे ओके मनी बिल टा को प्रेसिडेंट विथहोल्ड करि परिबे ऑलरेडी हेछि आगु द फर्स्ट स्टेट इन व्हिच लिंग्विस्टिक बेसिस से जोडा क्रिएट हेतला आंध्र प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फजल अली कमीशन हमें कहितले के तीन जण मेंबर थिले पुआबे फजल अली के पानिकर फजल अली हुदानाथ कुंजरू ओके ऊपर आडू करी करी आछे तुम भूली जाउछ ओके तो ठीक है हां आसा राइट टू एजुकेशन एटा पढितला देखो राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल बिटवीन 86 अमेंडमेंट एक्ट रे 2002 ओके 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे 6 रु 14 वर्ष पिलां को एटा हमर केते नंबर आर्टिकल 21 ए 21 ए so which one of the following is not a department of finance ministry of कोडा डिपार्टमेंट रा आसुन बैंकिंग अफेयर आसुन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक अफेयर हमर बजट की को डिपार्टमेंट परीक्षा रे पड़ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ओके so all India whip conference is organized by Ministry of Parliamentary Affairs एटा टिए कहि दियंत तो कोन एटा तो व्हिप कॉन्फ्रेंस व्हिप माने कोन कहलो माने सबु दलर जणे जणे चीफ थांती जे आमे कोउदरे वोट दबा जणे धर कांग्रेस रा जणे चीफ व्हिप थिबे तांकर से मेसेज करिवे ग्रुप रे काली एतिकी बेले वोट होची आमे आ फॉरे दबा कि अगेंस्ट रे दबा तेनु से जो आमे कहले व्हिप कॉन्फ्रेंस माने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तरफ रु जणे हमर थांती पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जे कि हमर गवर्नमेंट रे रहउछंती सिमिलरली अपोजिशन पार्टी रे जणे थांती तो इमानकर जो आमे कहले
जे विदिन पार्लियामेंट भितर जो कोऑर्डिनेशन करिया पई प्रत्येक दलर जन जन मेंबर थांती तो ऑल इंडिया व्हिप सेम सिमिलरली हमर स्टेट रे भी थांती तेणु यही जो कॉन्फ्रेंस हुए ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस द मिनिस्टर पार्लियामेंटरी अफेयर्स सेटा करंट ओके यू पर्पस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 रे कौन पे रखा जाय नेशनल यूनिटी नेशनल यूनिटी नेशनल यूनिटी सबु धर्म पई हमें समान कहबा मैरिज और डिवोर्स केस रे हमर हिंदू धर्म पई अलग मुसलमान धर्म पई अलग सो टू ब्रिंग यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर तो सेति में हमर नेशनल यूनिटी पई ही हमर कोन करा जाउची ना एटा ऐड कराइची सो आंसर सी ओके पॉलिसी एज ए रैशनल चॉइस इन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज एटा कोन ना रैशनल थ्योरी ओके सो बी इज द करेक्ट आंसर कीपिंग कंट्रोल ओवर द डेलीगेट लेजिस्लेशन इज ए पावर ऑफ so delegate legislation is controlled by parliament and judiciary okay keeping control over the delegated legislation तो एटा हमरो आंसर एथिरे नाही ओके सो पार्लियामेंट आ एटा जुडिशियरी हमरो रहउची पावर ओके सुप्रीम कोर्ट ठीक अछि हमें 21 जाय कले 22 23 हमें नेक्स्ट क्लास पे करियो ओके आ गोटे हमें कोन करबा 15 रु पछकु गोटे करबा जोडा ओल्ड से वर्जन ना पढुनी आउ फैक्चुअल क्वेश्चन हमें करि देबा फिर भी किंतु 22 23 होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट जोटा लेटेस्ट पैटर्न 22 23 सेटा हमें करबा नेक्स्ट क्लास पब्लिक पॉलिसी रो जो थ्योरी अछि सेटे कहि दियो सर हम कहि देबी ओके पब्लिक पॉलिसी रो हमें पढिबा गोटे दिन पब्लिक पॉलिसी रो पूरा टोटल थ्योरीटा पढ विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक अछि थैंक यू एवरीवन Thank you, sir. Thank you, sir.